Am I audible? One second. Yes, sir. Yes, sir. Hello? Good evening, sir. Hello, Okay, okay. sir. Yes, sir. You are audible. Okay, okay. We'll start. So ଆଜି ଜେଏସ୍ ମିଲ୍ଟା କରିବା କାଲି ୱିଲ୍ ଡୁ ଅଦର ଟପିକ୍ସ ଆଉ ଲେନିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ହଁ ସାର୍ ମସିଆଭେଲିଟା ସାର୍ ଖାଲି ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ବୁଝିବା ସେତେ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ओके सो जेएस मिल लेट अस अंडरस्टैंड हाँ गोटे सेकंड हाँ बोलो बोलो ये कौन सा पड़ा है 9 बजे ये 9 बजे वाला अभी कर दे रहा हूँ हाँ okay so JS Mill will study today okay so PPT I have already shared you can see and it can be used as a notes okay so first let us try to understand the background of JS Mill so JS Mill is a English philosopher okay he was born in 1806 so he is a 19th century philosopher and he was a disciple of Jeremy Bentham JS Mill को उपरे मेनली 4 जण लोकंकर इन्फ्लुएंस अछि जणे होचंती तांकर फादर होचंती जेम्स मिल सेकेंड होचंती जेरेमी बेंथम जे कि तांकर टीचर थिले ओके एंड तमरो जेएस मिल वाज होम स्कूल्ड से स्कूल जाई नथिले तांकर होम स्कूलिंग हेतिला एंड हिज फादर वाज अ रिसर्चर so he had appointed Jeremy Bentham. Now Jeremy Bentham was the propounder of the theory of utilitarianism. Hello? Yes, sir. हाँ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି ତ? Yes, sir. Yes, sir. So Jeremy Bentham was the propounder of the theory of utilitarianism. Now ତାଙ୍କରି influence ବହୁତ ପଡ଼ିଥିଲା ଜେଏସ୍ ମିଲ୍ଙ୍କ ଉପରେ so that ଜେଏସ୍ ମିଲ୍ ତାଙ୍କର ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜମ୍ ବେନ୍ଥାମଙ୍କର ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜମ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ he presented it in a different type of utilitarianism okay so ସେଇଟା we will discuss so first person is James Mill who is his father second is Jeremy Bentham okay who is his teacher तापर थर्ड पर्सन होचंती हु इन्फ्लुएंस्ड जेएस मिल माने बेसिकली ही वाज द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ तो मझिरे जेरेमी बेंथम माने तमर जेएस मिल वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट माने किड इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो तांकर 21 वर्ष बयस रे तांकर मेंटल ब्रेकडाउन हेतला तापर ता डिप्रेशन होतला तो सीए जो विलियम वर्ड्सवर्थ अछंती थिले इंग्लिश पोएट तांको पोएम गुडको द्वारा बहुत प्रभावित होइतिले एंड ही इज दैट पर्सन सो विलियम वर्ड्सवर्थ इज द थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन होचंती तांकर वाइफ को विषय हम पढिबो जे कि तांकर नाम अछि हैरियट ओके so he was homeschooled by his father James Mill he learned Greek at the age of 4 and Latin at the age of 7 okay so से देखो एज ऑफ 4 और 7 ने से मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखथिले बाय द एज ऑफ 13 he had learned equivalent to any college graduate से जेतेबेले ता 13 वर्ष बयस हेतिला से गोटे कॉलेज रो ग्रेजुएट जहाँ माने सीखी थाए से सब जानि सरथिले he became a secretary and research assistant to his father तो ता फादर भी जने फिलोसोफर थिले सो से तांकर रिसर्च असिस्टेंट थिले at the age of 17 he entered employment of East India Company okay now JS Mill is one of the person जेहेतु से तांकर माने ईस्ट इंडिया कंपनी रे एम्प्लॉयमेंट हेतिला तो सीए जने प्रो ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट थिले ब्रिटिश इंपेरियलिज्म और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को जेएस मिल सपोर्ट करुथिले तो ए पॉइंट रे हमें कहि परिबा कि ही वाज नॉट लाइक्ड और ही वाज डिसलाइक्ड बाय द इंडियन और एशियन फिलोसोफर्स बिकॉज ये गोटे इंपेरियलिज्म को सपोर्ट करुथिले तो इंपेरियलिज्म को सपोर्ट करिया माने डेस्पोटिज्म को सपोर्ट करिवा व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी को सपोर्ट करिवा ओके कारण सी भाबुथिले कि ब्रिटिश आर एजुकेटेड दे आर रैशनल थिंकर्स ओके and they can take their decisions in a correct way but not the Indians okay so आगो को जाय हमें पढ़िबा कि केमती तमर जेएस मिल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करूचंदी बट डेमोक्रेसी इन ए यूरोपियन कंट्री सपोर्ट करूचंदी डेमोक्रेसी इन ए एशियन कंट्री ही इज नॉट सपोर्टिंग ओके
So he lived under the authority of his father and a very hectic and monotonous life. जेहेतु सी सब माने 13 वर्ष बयस रिसर्च माने रिसर्च रे जोग दउथिले बहुत किछि लैंग्वेज शिखिथिले बहुत किछि पाठ पढुथिले तो तांको लाइफ टा बड़ा हेक्टिक एंड मोनोटोनस थिला माने गोटे छोट छुआ माने गोटे किड रो लाइफ जेमति हबा कथा सेमति नथिला इट वाज very high intellectual experience for him which made eventually his life very hectic and monotonous. Okay, तापर next will start हाँ next तानो कोणलम कोच. So Mill suffered a nervous breakdown at the age of 21. He goes into a long period of mental depression. The reason for this is given to his hectic, laborious and monotonous life imposed upon him by the father and Bentham. Okay, ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଦର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରେମି ବେନ୍ଥମ୍. ମିଲ୍ ରିକଭର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବାଇ ରିଡ଼ିଂ ଦ ପୋଏଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ. ଓକେ, ସୋ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କ ତମେ ବି ପଢ଼ିଥିବ ତ ସିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ରିକଭରି କଲେ ବାଇ ରିଡ଼ିଂ ଦ ପୋଏମ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ. ତ ହି ଇଜ୍ ଦ ଥର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଜେଏସ୍ ମିଲ୍ସ ଲାଇଫ୍. After his recovery, he was a totally transformed vision of. He had a totally transformed vision of life. He starts looking at his father's and Bentham's philosophy of utilitarianism critically. ସିଏ ବେନ୍ଥାମଙ୍କର ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜମକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବେଟର ଭର୍ସନକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ. ଓକେ, at the age of the 14 he meets a young woman Harriet Taylor with whom he marries after 20 years of friendship. माने 44 years रे तांकर मैरिज हला बट 20 years of friendship थिला हेरिएट को सहित. तो हेरिएट also had a huge intellectual influence on J.S. Mill. आउ एटार माने तार इम्पैक्ट आउ गोटे माने consequences होची कि J.S. Mill also became a pro-feminist. Okay, pro-feminist ହେଇଥିଲେ ଯେମିତି ତମର ପ୍ଲାଟୋ ଜଣେ pro-feminist ଥିଲେ. J.S. Mill also was a pro-feminist and this is because of his wife Harriet Taylor. Okay, so and Harriet Taylor was a very intelligent माने बहुत intellectual माने बहुत well read बहुत intellectual lady ଥିଲେ. Then कौन है विल स्टडी तो एगुड़ा सब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ J.S. Mill. सो J.S. Mill का गोटे इम्पोर्टेंट वर्क होची तमरा पॉलिटिकल इकोनॉमी जोटा कि से तमे देखो 1806 रे ही वाज बोर्न एंड ही रोट पॉलिटिकल इकोनॉमी एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल 1820. सो एट 14 इयर्स ऑफ 14 इयर्स ओल्ड रे सी गोटे बही लिखथिले. ओके, तापर सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843. Then on liberty he wrote on 1859. Subjection of women in 1869. Okay, now 1869 is a subjection of women एटा तांको जो वाइफ थिले हैरिएट टेलर तांको इन्फ्लुएंस रे से लिखथिले. द कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एटा गोटे लिखथिले. लास्ट बुक होची तांको लास्ट बुक होची ऑन यूटिलिटेरियनिज्म which is a different version of the utilitarianism as propounded by Jeremy Bentham. Okay, तो फर्स्ट आम पढ़ा कि मिल कौन मॉडिफाई कले बेन्थाम कर यूटिलिटेरियनिज्म को. ओके, सो मिल कहले मिल एक्सेप्टेड द बेसिक क्लेम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दैट द एक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस प्लेजर एंड अवॉइड्स पेन इज मॉरली गुड. तो मिल फर्स्ट जेरेमी बेन्थाम कर केते गुडा जिंस को एक्सेप्ट कले से जो एक्सेप्ट कले तार बेसिस होची पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल. नाउ यूटिलिटेरियनिज्म रो जो मेन प्रिंसिपल होची ताको कह जाय प्लेजर प्रिंसिपल एंड पेन प्रिंसिपल. आउ यूटिलिटेरियनिज्म माने होची तार मेन ऑब्जेक्टिव कोन माने यूटिलिटेरियनिज्म कोन कहूची कि ह्यूमन बीइंग शैल मिनिमाइज देयर पेन and maximize their pleasure. Okay, he also accepted that it is the consequence of the action that decide whether an action is right or wrong. तो गोटे action ना consequence. Okay, एटा को तमे end concept भी कहि परिबो कि end of an action or result of an action decides whether that action is right or wrong. Okay, तो एटा को से कहले कि माने सपोज तुम यूपीएससी प्रिपेयर कर तुमको कौन माने तुम क्लीयर कले तुम गोटे आईएएस ऑफिसर कि ओएस ऑफिसर हम
तो तुमको डिग्निटी मिलिबो, तुमको लोक मान सेवा करिया पई अपॉर्चुनिटी मिलिबो। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रिपरेशन इज गुड, ता माने से दैट एक्शन इज गुड। तो ए तीनटा पॉइंट लास्ट फास्ट दुटा पॉइंट सी एक्सेप्ट कले जेरेमी बेंथाम कर। कोटा सी डिफर कले, सी रिजेक्ट कले बेंथाम कर क्लेम कि ऑल प्लेजर्स हैव आर क्वांटिटेटिवली इक्वल। ओके, माने सपोज तुम माने गोटे पर्सन एक्स अच्छे तापाई प्लेजर होची चिकेन बिरियानी मटन करी खाइबा। ओके, खाली खाइबा फूड माने ही इज अ फूडी, तापाई फूड गोटे प्लेजर। बट देयर इज अदर पर्सन हु इज नॉट ए फूडी, तापाई प्लेजर होची बही पढ़िबा, बही लेखिबा, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करिबा। ओके, तो as per J.S. Mill, the second one is a higher type of pleasure, and the first one mane food, okay, or the pleasure of let us say physical pleasure, okay, or quenching thirst, एगुड़ा सब होची lower kind of pleasure। तो सीए कहउचंदी, मिल कहउचंदी कि पोएट्री इज बेटर देन पुष्पिन। पुष्पिन गोटे छोट पिलार गेम अच्छे। ओके, सीए कहउचंदी कि गोटे पोएट्री इज ए हायर प्लेजर, ओके, एंड पुष्पिन इज अ लोअर प्लेजर। आ सीए से जो प्लेजर टाकू कहउचंदी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर as per their qualitative aspect or तो as per their qualitative value। okay, so से एटा गोटे फेमस saying, it is better to be human being dissatisfied than a pig satisfied। तो pig रो कौन माने pig रो pleasure कौन जोटा तमर पंक मड रे खेलिबो, मड रे ये रोल करिवो, सेटा होची pig रो pleasure। ह्यूमन बीइंग कर प्लेजर कौन सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करिवे, पोएम लिखिवे। ओके, तो सी कहते कि ह्यूमन बीइंग डिसैटिस्फाइड इज ओके, बेटर देन पिग सैटिस्फाइड। ओके, इट इज बेटर टू बी ए सॉक्रेटिस डिसैटिस्फाइड देन फुल सैटिस्फाइड, सेम जिनस। ओके, सो सी कहते कि सी कहते गोटे हायर प्लेजर माने आ एटा सत्य भी, बिकॉज यूटिलिटारियनिज्म समस्त प्लेजर डेफिनेशन सेम नुहे। ओके, तो बहुत देखो सिविल सर्वेंट अच्छी माने दे आर ओके टू टेक ब्राइब और दे हैव agreed to take bribe or accept illegitimate wealth, but there are some civil servant their pleasure is to just to serve the society, to serve the people of the state or country। okay, so समस्त pleasure definition कौन सेम। तो एई जिनस रे मिल डिफर कले जेरेमी बेंथाम कटारो। तापरे मिल तुम कहले यूटिलिटी माने ताको पे यूटिलिटी सब गोटे बेंथा यूटिलिटरी गोटे सब। हाँ, माने तमे ड्रग्स कर, तमे चिकेन मटन खाओ, तमे अल्कोहल एंजॉय कर, सबूर यूटिलिटी सेम। ओके, माने इफ यू आर हैविंग प्लेजर दैट इज सेम, बट जोटा कि प्रैक्टिकली ठीक माने ठीक नुहे। ओके, बिकॉज देयर आर हायर लेवल ऑफ प्लेजर। बट केतक केस रे तमे देखिबो बेंथाम इज राइट, बिकॉज तमे देखो इंडिया रे how many poor people will enjoy writing a poem? They will not, because तांकर निजर subsistence ପାଇଁ तो परिश्रम करिया पड़िबो। तो earning money, just meeting the basic need is a pleasure for them। okay, so poetry जो higher level of pleasure हमें कहूचे सेटा में भी गोटे यूरोपियन सोसाइटी रे पॉसिबल जोटी कि सब लोक रिच, बट इंडिया रे हायर लेवल ऑफ प्लेजर काई, इट इज जस्ट योर फूड ड्रिंक्स एंड सेक्स, इजंट इट? सो लोक मैंने खाली गोटे जॉब पाई कि माने जॉब टा आसिल तुम लाइफ टा सेटल हम, बट तुम यूरोपियन देख तांकर कौन जिते पैसा जाओ रिसर्च रे इन्वेस्टमेंट हम, तो सही जिनस। सो मिल वाज ए चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ओके, सो मिल वाज ए चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ही आस्क्ड व्हेन इट इज राइट फॉर द सोसाइटी टू इंटरफियर विद द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो ये जो मिल्स ऑन लिबर्टी माने मिल सी से तीन कॉन्सेप्ट अच्छी। गोटे हूँ हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल अनुसार माने मिल कहते कि इंडिविजुअल लिबर्टी इज फाइन, माने दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, but individual liberty should not go to an extent when it is harming or interfering with the liberty of another individual or harming the liberty of a society। okay, तो harm principle को society can interfere with the liberty of an individual only to protect itself। माने
ओके ସେଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଯଦି ସେଇଟା ମାନେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଇଟା ଆଉ କାହାକୁ ହାର୍ମ କରୁନାହିଁ ଦେନ୍ ବେନ୍ଥାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସୁଡ଼୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତ ହାର୍ମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ସିଏ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍, ଅଦର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍। ସେଲ୍ଫ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତମର ସପୋଜ୍ ତମେ ତମ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛ, ଓକେ ୟୁ ଆର୍ ଟେକିଂ ଆଲକୋହଲ୍, ବଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଲକୋହଲ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ବଟ୍ ସେଟା ଇଞ୍ଜୁରି କରିବ ତମ ହେଲ୍ଥକୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ create any trouble for your ପଡ଼ୋଶୀ, okay? So there state is state will not stop you, ମାନେ ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୌଣସି law ନାହିଁ କି if you are closed door you are drinking or you are smoking, there is no law that will put a penalty on you, okay? But you smoke at a public place, so what will happen? Others will be affected, okay? Or you drink and drive, so you are a danger to the society, to the other people who are driving on the same road, okay? So say case re society can interfere in your individual liberty, everything else is fine. So Mills कहउଛନ୍ତି कि self regarding action ने your individual liberty is always preserved and nobody can interfere, okay? So self it cannot be, এটা can be नोहे, it cannot be restricted by anyone, self regarding action. Other regarding action it can be restricted, जोथिरे अन्य लोक restrict होथिबे, माने अन्य लोक affect होथिबे, okay? तो आ गोटे तार एग्जांपल हे परिबो, सपोज यू आर प्लेइंग म्यूजिक इन ए लाउड स्पीकर, ओके, बट यू आर मेकिंग इट सो लाउड दैट अदर्स योर नेबर्स कैन नॉट स्लीप, सो देयर इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो से लॉ होईची कि राति 10टा पर तुम लाउड स्पीकर बजाई पारिबो नाही, ओके? सो सेटा होची अदर रिगार्डिंग एक्शन। सर कॉमन एग्जांपल जो एथिरे लिखले हबो ना, नॉर्मल हाँ एग्जांपल सिंपल एग्जाम तुम एटा लिखिबो ना, ड्रिंक एंड ड्राइव टा लिखिबो, drink and drive is punishable offense in India, okay, and in actually in most of the countries, but drinking inside your home, it is not an offense, okay? तापर तमरो इंडिविजुअल लिबर्टी रो आउ कोन एग्जांपल हे परिबो, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ହଁ ତମର ଇଏ ଭ୍ୟାଣ୍ଡାଲାଇଜିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଭ୍ୟାଣ୍ଡାଲାଇଜିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ ଅ ଅଦର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍, ବିକଜ ତମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଗଲ, ତମେ ସେଠି ଭ୍ୟାଣ୍ଡାଲାଇଜ୍ କଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଉ ତମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କଲ, ୟୁ ଭ୍ୟାଣ୍ଡାଲାଇଜ୍ଡ ଇଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରିଂ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ବଟ୍ ତମେ ନିଜ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଯଦି ମିସୟୁଜ୍ କରିବ, ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିବ, so there is no problem, there is no issue with the government, state cannot interfere, okay? So then এটা হচ্ছে সেলফ রিগার্ডিং অ্যাকশন, অদর রিগার্ডিং অ্যাকশন, ওকে? সো মিল সেটা লিবর্টি বিষয়ে কহিলে, মানে আই ফাউন্ড মিল ভেরি ରାସନାଲ, ଅଦର ଫିଲୋସଫରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମିଲ୍ ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲେଭେଲ ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ, ବିକଜ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ତାପରେ ମିଲ୍କ view on freedom of expression, Mill considered freedom of expression to be the most important liberty, okay? He was concerned with individual development, ଆଉ ତମେ ଦେଖ freedom of expression ରହିଲେ ହିଁ individual development ହବ। So individual development means one's rational capacity to think, and it is possible only when he or she is allowed freedom. He said truth is never absolute and complete, we can get into higher level of truth by having free debate and discussion. तो एथिरे से हेगेल को भी सपोर्ट करछन्ते, माने तमे एटू पैरेलल ड्रॉ कर परिबो। हेगेल कोन कहउछन्ते कि ट्रुथ इज नेवर एब्सोल्यूट, माने तमरो थेसिस आ एंटीथेसिस से सिंथेसिस बाहरिबो, ओके? तो सेटा सब बेले इंप्रूव हे चलीथिबो, ओके? आ तमरो एटा भी आउ किए सपोर्ट करछन्ते, दिस इज आल्सो सपोर्टेड बाय तमरो जैनिज्म कोन कहउची अनेकांतवाद, ओके? माने it is never, one thing is never true, there can be multiple ways of doing something. So अनेकांतवाद जोटा तमरो इंडियन फिलोसफी रे अछि, सेटा भी तमरो मिल्स का थ्योरी को सपोर्ट करूची। सो सी तमे एटा लिख परिबो, इवन तमरो जो सॉक्रेटिस कोन, माने he was trying to find the truth about justice through free debate and discussion, okay? Mill famously said that minority opinion
must never be suppressed when it is wrong or right. तो ए केस रे सीए तमर डेमोक्रेसी को पार्शियली सपोर्ट करुछन माने आगु को हमें नेक्स्ट स्लाइड रे देखबा कि ही इज सपोर्टिंग डेमोक्रेसी बट ही इज सपोर्टिंग डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होची तमर सपोज मोनार्की. तो मोनार्की रे तो चांस ही नहीं माने डेमोक्रेसी रे हमर जंदी इंडिया रे डेमोक्रेसी रे कोन डिस्कशन होची डिबेट होची पार्लियामेंटरी डिबेट डिस्कशन 0 आवर डिस्कशन होची किंतु मोनार्की रे तार चांस अछि कि नो. ओलिगार्की रे तार चांस ओलिगार्की माने द गवर्नमेंट ऑफ फ्यू रिच पीपल सेतरे भी चांस नहीं. आरिस्टोक्रेसी रे अछि कि जोटा कि द गवर्नमेंट ऑफ फ्यू इंटेलेक्चुअल्स नहीं. ओके तो डेमोक्रेसी रे टिके अछि तो मिल डेमोक्रेसी को पार्शियली सपोर्ट करूछन आ कहउछन इट इज ए प्रेफर्ड वे ऑफ प्रेफर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ही इज नॉट completely supporting democracy because democracy में there is a possibility of minority opinion being suppressed. okay इंडिया रे अवश्य सेटा नहीं because इंडिया रे हमरो जो आर्टिकल 29 और 30 अछि so it is तमरो promoting or protecting the minority interest. okay बट तमे देखो माने इंडिया रे कोन सब तमरो जो पारसी रिलीजन है इस्लाम है बुद्धिज्म जैनिज्म जो माने माइनॉरिटीज ओके सेमान को ओपिनियन को सपोर्ट करा जाउची बट केते गुडा कंट्री रे सपोज देयर आर सम इस्लामिक स्टेट्स जोटा कि स्टेट रिलीजन इज इस्लाम सेठी कोन होची तमर माइनॉरिटी ओपिनियन इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन. ओके सो बहुत गुडे माने नॉन मुस्लिम्स कर प्रोसिक्यूशन हुए से सो कंट्री रे. ओके सो मिल famously said कि minority opinion must never be suppressed when it is wrong or right. माने opinion right हो कि wrong हो we should hear them first. तो जदि opinion right अच्छी society will correct itself not the minority. सोसाइटी जदि राइट अच्छी तो सोसाइटी ही निज को करेक्ट करिवो जदि रॉन्ग अच्छी तो सोसाइटी रो स्टैंड सेथरे क्लियर रहला माने सोसाइटी रो स्टैंड ता सस्टेन कला. ओके which is good but आमे तांको ओपिनियन को सुनिबा निश्चित. ओके तापरे मिल ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. ओके तापरे मिल कोन करछंती फेवर्ड डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ता माने नो कि ही सेड कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी रे देयर इज ए चांस ऑफ being minority माने तमर minority opinion being suppressed or getting suppressed. okay now because in democracy people can exercise their moral intellectual capacities by participating in politics जोटा कि इंडिया रे होची और अमेरिका रे होची people are participating in politics. okay तमरा माने PRI system हो कि जो सब people participation अच्छी democracy रे. ओके बट तमर मोनार्की रे कोन डेमो पीपल पार्टिसिपेशन नाही राजा जहा कहबे सेया ओलिगार्की रे फ्यू रिच लोक जहा कहबे सेया. ओके तो बट डेमोक्रेसी रे पीपल पार्टिसिपेशन अच्छी जदि इट इज अ पॉपुलर ओपिनियन बेस्ड मॉडल और पॉपुलर डेमोक्रेसी इज अ पॉपुलर माने जोटा मेजॉरिटी ओपिनियन बेस्ड मॉडल बट एथरे पीपल पार्टिसिपेशन निश्चित रूप अच्छी. तो मिल कौन कहउछन देखो मिल एडवोकेटेड डेमोक्रेसी ओनली फॉर दोज सोसाइटी where people are educated, rational, noble and virtuous. Now this thing is being criticized heavily. okay तो ए केस रे एक्चुअली से कौन कहउछन देखो मिल सेड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सुइटेबल फॉर नॉन यूरोपियन सोसाइटी. तो मिल जदि तमे इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे मिल को पचारिबो तो से कहउछन इंडिया रे डेमोक्रेसी टा ठीक नुहे माने इट इज नॉट गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया because most of the people are not educated माने एबे तो हेई गलानी बट सेतबेले नथिले and this is the reason why he supported the British imperialism or British colonialism. okay so एटा को आउरी को जो मिल कर एसी थ्योरीटा को सॉक्रेटिस को थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से भी सेडे कहउतले जे समान भी सिटीजनशिप दबा दरकार जो माने कि एजुकेटेड इंटेलिजेंट तो सेटो को हमें पैरेलल ड्रा कर हबन. तो मिल तो कहउछन ना इट इज माने मिल इज इन मिल हैज पॉजिटिव व्यूज अबाउट सॉक्रेटिस. से कहउछन कि इट इज बेटर सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड rather than a pig being satisfied. okay तो सॉक्रेटिस जो कहउतिले कि जो माने एजुकेटेड देखो
बट से एंगेलटा माने माने एथिरे प्रॉब्लम कौन सी जो एजुकेशन कथा कहते ना मिल देख मिल तुम बुझे चेष्टा करता ओरिजिन कौन सी जड़े ब्रिटिश लोक माने सी इंग्लिश फिलोसोफर तो सी एजुकेशन माने इंग्लिश एजुकेशन ओके तो सी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को कहीं सपोर्ट कले आमे कौन कहे कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इज एक्सप्लोइटेटिव बट सी कहते कि सी बिलीव कर तमर ब्रिटिश से कह ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंपेरियलिज्म इज गुड माने सी कहते कि इट इज अ व्हाइट मैन्स बर्डन माने दुनिया को बाट देखा हूँ व्हाइट मैन्स बर्डन जोटा कि इज नॉट ए गुड कॉन्सेप्ट इनफैक्ट ही वाज क्रिटिसाइज्ड बाय most of the philosophers from the India and eastern part of the world okay so ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି fearing tyranny of majority he supported concept of plural voting now ସିଏ ଡେମୋକ୍ରାସି କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବଟ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଗୋଟେ tyranny of majority ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଓକେ ତ ସିଏ ପ୍ଲୁରାଲ ଭୋଟିଂ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପ୍ଲୁରାଲ ଭୋଟିଂ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନୁହେଁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭୋଟିଂରେ କ'ଣ ହବ ତମର ସପୋଜ 5 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଜଣକୁ ଦେବି सेकेंड देवी थर्ड देवी फोर्थ देवी फिफ्थ देवी बट सिंगल वोट हाँ सही सही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओके सिंगल वोटिंग रे कौन मु गोटे वोट देवी ओके किंतु तमे प्लुरल वोटिंग रे कौन हम तमे गोटे ऑर्डर देदेल ना सेकेंड पर्सन भी जितबार भल चांस अच्छी बिकज माने बहुत आम देखा कि कौ लोक को केतेटा फास्ट माने ये मिली ओके तो धर सपोज हाँ प्रेफरेन्स मिली तो से केस रे हम कौन हम कि सपोज फास्ट पर्सन टा कौन सी कारण मतलब ही इज डेड और ही लेफ्ट द कंट्री तो यू हैव ए सेकेंड ऑप्शन तुमको बारंबार इलेक्शन करिया को पड़िबनी ओके और तमे देखो मझी रे सपोज आमर इंडिया रे जो डेमोक्रेसीटा चलती से कौन प्रॉब्लम कहला सपोज सरकार भांगी गला तमे कौन गोटे नुआ इलेक्शन करिवो ओके किंतु तमे जदि प्लुरल वोटिंग करिवो तमर सपोज 5 वर्ष भितर 1 ईयर पर तुम देखले गवर्नमेंट बहुत करप्ट तुम से लोकटा बाहर करिकी जो लोकटा को मैक्सिमम सेकेंड प्रेफरेंस मिली से लोकटा तुम अपॉइंट कर परिवो माने सेही पार्टी को तुम अपॉइंट कर परिवो एज ए गवर्नमेंट माने सपोज सेकेंड प्रेफरेंस मैक्सिमम कांग्रेस को मिली फॉर एग्जांपल तो कांग्रेस कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट इन केस बीजेपी गवर्नमेंट कोलैप्सेस ओके सो प्लुरल वोटिंग रे कौन हम गोटे टाइरेनी ऑफ मेजोरिटी रहिबनी केबे भी बुझ पारलो मिल सेड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सुइटेबल फॉर नॉन यूरोपियन सोसाइटी एटा बहुत क्रिटिसाइज करा जायछि बिकॉज इंडिया रे तो माने इंडिया रे देयर माइट बी लूप होल्स बट डेमोक्रेसी सक्सेसफुली माने सस्टेन करिछि वेयर एज इन द यूरोपियन कंट्रीज तमे देखो 1806 रे मिल को जन्म ओके ना तुम जितक वर्ल्ड वार सब यूरोपियन कंट्री रे ही ना माने ओरिजिन कौन वर्ल्ड वार यूरोपियन कंट्री आ तुम जर्मनी रे तो कहीं डेमोक्रेसी आसलानी तुम तो जर्मनी रे तुम नाजिज्म आसला तुम इटली रे फैसिज्म आसला तो आम सी जो कहते कि यूरोपियन सोसाइटी पीपल आर एजुकेटेड एंड दे आर रैशनल नोबेल एंड वर्चुअस दैट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस जदि से मैंने रैशनल होता से मैंने केबे भी वर्ल्ड वार कर न था केबे भी 6 मिलियन लोक मरी न था यूरोप रे ओके सो एंड ऑन द कंट्रारी इंडिया एट 140 माने क्रोर्स पीपल दे आर एबल टू माने तमर डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चली तमें देख पाकिस्तान माने एटी मिल केते गुडा जिनस आमे कहि परिए मिल ठीक तमें देखो पाकिस्तान सेठी कौन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रन कर पारुछि देयर इज ए फ्लक्चुएशन बिटवीन तमर आर्मी रूल एंड तमर डेमोक्रेसी तमर म्यांमार रे देखो कौन हला तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोलैप्स्ड ओके तापर तमर व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन श्रीलंका डेमोक्रेसी बट इट इज अ फैमिली डायनेस्टी ओके so Mill is partially right about Asian countries but not always right and Mill is also partially right for the European countries okay so it is conditional Mill जो कहते कि democracy is not suitable for non European society
it you can criticize it. Okay, he supported despotism in such societies. He was also supporter of British imperialism because देखो एटा तांको बैकग्राउंड मु तुम बैकग्राउंड कहबार उद्देश्य होचे या कि से जो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को सपोर्ट करुथिले इवन ही डिड अ जॉब इन ईस्ट इंडिया कंपनी. East India. Okay, but it is because of his background. But ता माने नुह कि Indians were uneducated. Indians were educated in Sanskrit. Maybe Sanskrit यूरोप रो language न हो पारे, but it was a rich माने आजिका डेट रे तो more richer language than English, isn't it? So एगुड़ा सब मिल का क्रिटिसिज्म. तापरे मिल का व्यू ऑन women. Okay, मिल का व्यू और women एटा ए जो मिल का व्यू ऑन women and he had a positive view. So मिल को गोटे प्रोटो फेमिनिस्ट और क्वाजी फेमिनिस्ट मध्य कुआ जाए ना. मिल को जो प्रोटो फेमिनिस्ट हबार रीजन होची तांकर वाइफ हैरिएट टेलर जार कि मुझे माने बिगिनिंग रे कहतली. सो हैरिएट टेलर इज द फोर्थ पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड मिल्स लाइफ. आउ सी 24 वर्ष बयस देखाई 44 वर्ष बयस मैरिज होता सहित. आउ सी जेहेतु निजे हैरिएट टेलर बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल थिले तो तांको द्वारा मिल को गोटे फेमिनिस्ट थिंकिंग डेवलप होता. सो मिल इज द पर्सन आउ प्लस मिल इंडिविजुअल लिबर्टी को निजे प्रमोट करुले. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट he supported women's right to vote, equal property rights to women and a right to get easy divorce. तो तमें जदि गोटे ह्यूमन राइट्स विषय भी लिखो यू कैन राइट अबाउट मिल्स कि माने देखो सेतबेले कोन थला क्रिश्चियनिज्म रे सेते माने इजी नथिला डिवोर्स. ओके, तो जेमती तमर इस्लाम रे कोन डिवोर्स इज इजी बिकॉज इस्लाम रे मैरिज इज जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इट इज नॉट ए सैक्रेड इंस्टीट्यूशन. बट तमर क्रिश्चियनिटी हो कि हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म रे मैरिज इज ए सैक्रेड इंस्टीट्यूशन. सो सेथिरे कोन हुए माने देखो एबे कोन एबे मॉडर्निटी जोगु तमर वेस्टर्न कंट्री डिवोर्स इजीली हो जाउची. बट क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन डज नॉट वेरी मच सपोर्ट तमर डिवोर्स. बट मिल सेतबेले सपोर्ट करथिले टू गेट द इजी डिवोर्स माने गोटा वुमेन नो राइट सेटा. ओके, सो ही इज कंसीडर्ड द प्रोटो फेमिनिस्ट. आउ तांकर बुक रे से सब लिखथिले सब्जेक्शन ऑफ वुमेन. एटा जदि मन रख पारे बहुत भलो. ओके, एंड मिल्कर जो वुमेन मान प्रति सपोर्ट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ही बीइंग अ लिबरल थिंकर और ही बीइंग द चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. ओके, एंड सी कहले कि मिल सेड दैट वुमेन आर इक्वल टू वुमेन आर इक्वल टू मेन. एटा वुमेन और मेन in all their abilities, so there is no justification for any discrimination. Okay, so Mill's work have inspired many other future feminist thinkers. Okay, so एटा तो mainly मन रखियो कि Mill was influenced by 4 people. One is his father James Mill, second is his Jeremy Bentham, थर्ड इज विलियम वर्ड्सवर्थ. जेतबेले ताऊ डिप्रेशन होता तो विलियम वर्ड्सवर्थ तो पोएम से पढ़ी आपर ही ट्रांसफॉर्म टू ए डिफरेंट पर्सन. फोर्थ होचन निजर वाइफ जे कि हैरिएट टेलर. ओके, आ सी जो इन्फ्लुएंस जो फेमिनिस्ट थिंकिंग आसला. तापर मिल इज अ सपोर्टर ऑफ माने डेमोक्रेसी बट नॉट ए सपोर्टर ऑफ ए टायरेंट पॉपुलर गवर्नमेंट. ओके, एगुड़ा सब आउ कौन जॉन स्टुअर्ट. दिस इज अबाउट जॉन स्टुअर्ट मिल. सर जेएस मिल कोडा गोटे पछरा छ हम लिबर्टी ऊपर न तो वुमेन ऊपर जति ऊपर स्टार्टिंग ले ताकर कुछ इंट्रोडक्शन हम लिखियो 4-5 लाइन जे एइडा लिखियो ना. हां, तमे जदि एइडा लिखि परलो चारिटा लोक इन्फ्लुएंस करथिले, इंग्लिश फिलोसोफर करथिले. से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तांकर बैकग्राउंड माने से जॉब भी करथिले. आ मेनली तांकर होम स्कूलिंग हेतला. तांकर फादर आउ तमर बेंथम तांकर टीचर थिले. तो एथिरे एग्जामिनर भाबियो कि तमे जानिचो माने तांकर बैकग्राउंड जानिचो. बिकॉज देखो कोनोसी भी फिलोसोफर ना तांकर बैकग्राउंड जोकु तांकर थॉट टा डेवलप हेता है. माने जेमती तमर ये तमर मैचियावेली इटली रे जतबेले थिले सेतबेले इटली रे बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थिला. तो सी गोटे स्ट्रांग स्टेट पई कि माने सपोर्ट करथिले कि हमर स्टेट किबा राज्य सबले स्ट्रांग हो. तो सी कोन लिखले प्रिंस. ओके, प्रिंस केमथि होबा दरकार. सिमिलरली चाणक्य जे कि तमर मौर्यन एम्पायर को टाइम रे थिला. तो सी कोन
से कहले स्टेट इज ऑर्गेनिक इट शुड एक्सपांड एक्सपेंशन इज स्टेट तो मौर्यन एम्पायर देख तुम केते बड़ थिला मौर्यन एम्पायर ओके तमर थॉमस हॉब्स इंग्लिश ब्रिटिश तमर इंग्लैंड बहुत माने सेतबेले इनस्टेबिलिटी थिला तमर मोनार्की रो ग्लोरियस माने तमर पार्लियामेंटरी सिस्टम लोक आनिया चाहूले तो सी भी कहले कि गोटे स्ट्रांग स्टेट हो लेवियाथान स्टेट ओके तो आंकर तुम सेमती लिखिदेले बैकग्राउंड एग्जामिनर जानीदेला कि मिल कौन कहू माने से बैकग्राउंड तार कौन से कम कह चाहते बट तुम देख मिल केते 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 माने फाइनली इट इज ऑल इन प्लेस मिल कहउचंदी इंडिविजुअल लिबर्टी डेमोक्रेसी सब हम बट सी कौन कहते यूरोप रे हम इंडिया रे हेई परिवनी बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी को केस रे हम देख ये लिखाई डेमोक्रेसी से केस रे हम when people are educated rational thinker okay one second सेटा हम लिखी जी rational capacity to think educated से केस रे तमे इन डेमोक्रेसी हे परियो बट तार बहुत गुडे क्रिटिक्स अछि कारण सबु एशियन कंट्री डेमोक्रेसी तो फेल हेनी ओके तमरो ए जो साउथ कोरिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री ना साउथ कोरिया कौन डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक माने कैपिटलिस्ट बट देखो साउथ कोरिया गोटे सबुठु वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज तमर सिंगापुर कौन डेमोक्रेसी हैला ए सेरी वन ऑफ तमर जापान भी सेया तो से माने एशियन कंट्री हे कि भी तो आज सबुठु आगे बट तुम देखो यूरोपियन कंट्री बहुत गुडे कंट्री कोलैप्स माने तांगर पॉलिटिकल सिचुएशन तो एम सब लिखिबो ओके सो एटा होचे मिल्स कर गोटे हाँ को